morning, dear friends. Let us start chapter number 7. Can you see the pattern? This is part 8. In this video, we will learn secret number and number surprises at page number 110 of the textbook. So this is last video of this chapter. We will learn secret numbers, how to find a secret number. Okay, so let us start secret numbers. Bano and Binod were playing a guessing game. Okay, what is guessing game? Just one is telling some clues, and on the basis of that clue, other is just guessing what is that number. Okay, each tried to guess the other's secret number from the clues. Okay, so can you guess these secret number? Let us see what are the clues and what is the secret number behind that. Okay, so it is larger than half of 100. Okay, first clue is it is larger than half of 100. What is half of 100? Half of 100 means divide by 2 means 50. So half of 100 is 50. What does it mean? It is larger than half of 100 means the number is larger than 50. Okay. So by the first clue, we can understand the number is larger than 50, but we cannot say what is that number. Now, it is more than 6 tenths. 6 tenths means 60. And less than 7 tenths. 7 tenths means 70. Okay. It means वो जो नंबर है वो 60 से तो बड़ा है और 70 से छोटा है. मीन्स 61 से 69 के बीच में वो कहीं ना कहीं वो नंबर है. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 एंड 69. ओके, वो 60 से बड़ा है तो 61 हो सकता है, 70 से छोटा है तो 69 हो सकता है, यानी 61 से 69 के बीच वो नंबर हो सकता है. आओ देखते हैं अगला क्लू क्या है. अगला क्लू कहता है द 10th डिजिट इज मोर देन द 1st डिजिट, यानी कि जो 10th प्लेस पे जो डिजिट है वो 1st प्लेस से ज्यादा है. ओके, मींस ये नंबर नहीं हो सकते क्योंकि इन डिजिट्स पे यूनिट प्लेस पे बड़ी डिजिट है. यूनिट प्लेस पे 7 है, इधर 10th प्लेस पे 6 है, यूनिट प्लेस पे 8 है, 10th प्लेस पे 6 है, यूनिट प्लेस पे 9 है, 10th प्लेस पे 6 है. तो इन सभी केस में 10th प्लेस की डिजिट छोटी है. इट मींस 67 से 69 तक तो नंबर नहीं हो सकते. नाउ टुगेदर द डिजिट हैव अ सम ऑफ 11, मींस सम ऑफ द डिजिट इज 11. So sum of the digit 6, 1, 7, it means it is not the number. 6 plus 2, 8, it is also not that number. 6 plus 3, 9, this is also not that number. 6 plus 4, 10, this is not that number. 6 plus 5, 11, yes, this is the number. 6 plus 6, 12, so this is not the number. So exactly 65 is the answer. Okay, because in 65 6 plus 5 is 11. So the 65 is following all these clues. So in this way we can find secret numbers. Okay, let us see another example. It is smaller than half of 100, means less than 50. 50 से छोटा है. half of 100 is 50. 50 से छोटा है. It is more than 4 tenths, यानी कि 40. 4 tenths means 40 से बड़ा है and less than 50, और 50 से छोटा है. ओके, यानी कि 40 से 50 के बीच में वो कोई नंबर है, यानी कि वो 41 हो सकता है, 42 हो सकता है, 43 हो सकता है, 44 हो सकता है, 45 हो सकता है, 46 हो सकता है, 47 हो सकता है, 48 हो सकता है, 49 हो सकता है, 50 नहीं हो सकता क्योंकि 50 से छोटा है. द 10th
डिजिट इज 2 मोर देन 1 डिजिट। जो 10th डिजिट है वो 1 डिजिट से 2 मोर है। 10 डिजिट 4 है, 1 डिजिट 1 है, तो 3 मोर हो गया, मीन्स दिस इज नॉट द नंबर। 10th डिजिट 2 मोर देन 1 डिजिट, यहाँ पे जो 10th डिजिट है वो 2 मोर है, मीन्स वो 42 हो सकता है। ये नहीं हो सकता बिकॉज ओनली 1, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन 10th एंड यूनिट डिजिट, नो डिफरेंस। और इसके बाद तो सारी की सारी जो डिजिट्स हैं 10th प्लेस की वो ज्यादा है, कम है 1 प्लेस से। ओके, तो ये नंबर नहीं हो सकते। नेक्स्ट क्लू देख लेते हैं। टुगेदर द डिजिट्स हैव अ सम 6, यानी 42 में डिजिट्स को ऐड करेंगे 4 + 2 6, मीन्स द आंसर इज 42। So in this way we can guess numbers on the basis of clue. Okay, number surprises. Now number surprises. Ask your friend, write down your age. Okay, let us see, because you are class 5 students, so you can be 10 year, 11 year, 12 year. Okay, so not more than 12, not less than 10. So let us take any example. 10 year. Okay, now add it to 5, means we have to add 5. You can do it with your age, so it is 15. Now what we have to do, multiply the sum by 2. Now we have to multiply by 2. 15 2 is 30. Next, subtract 10 from it. 0, 2. Now divide it by 2. So we have to divide it by 2. So again, what is the surprise? Yes, we have started from 10 and reached to 10 again. If your age is 11 year, add 5 to it. It is 16. Then multiply by 2. This is 32. Then subtract 10, means 22. Divide by 2 means 11. So again we have started from 11 and reached on 11 only. So this is number surprise. So whatever your age, it is 14, 15, 16, 20. This rule is applicable for everyone. Now can you tell me how this is happen? ये मुझे कमेंट करके बताओ कि ऐसा क्यों हो रहा है। ओके, टेक अ नंबर, you take any number. Let us take 12. Okay, double it, means 12 multiply by 2. Double means, when we make it double means we either add the same number repeatedly or we multiply by 2. This is called doubling. This is 24. Now multiply by 5, means 24 multiply by 5. So let us multiply 24 by 5. 5 4 is 20. 2, 5 2 is 10 and 2 12, 120. And when we are dividing 120 by 10, so it becomes 12. So we have started from 12 and reached to 12. हम 12 से शुरू करके हमने उसे डबल भी किया, 5 से मल्टीप्लाई भी किया, फिर 10 से डिवाइड किया, तो हम लोग वहीं 12 पे पहुंच गए। ऐसा क्यों हो रहा है? हमने क्या किया, डबल किया। डबल किया मीन्स 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर क्या किया, फिर 5 से मल्टीप्लाई किया। ओके, तो क्या बन गया ये 5 2 is 10, यानी कि हमने इस पूरे नंबर को 10 से मल्टीप्लाई किया और फिर हमने अपने आंसर को क्या किया, 10 से डिवाइड कर दिया। ओके, पहले 10 से मल्टीप्लाई किया, फिर 10 से डिवाइड किया, मीन्स हमने उसको सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई किया है। हमने इस नंबर को सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई किया है और नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने से नंबर पे कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई चेंज नहीं होता। ओके, नाउ let us take another example. Suppose 10. Double it means multiply by 2. 20.
Now again double it, 20 multiplied by 2, 40. Add the number you took first to the answer. Add the number you took first to the answer. Means 40 में जो नंबर हमने ऊपर लिया था वो ऐड करना है. क्या आ गया? 50. Now again double it. 50 multiplied by 2 means 100. Now divide it by 10. Again we got the same number. 100 divided by 10 means 10. We got the same numbers. Okay. So similar logic is there. Now look at this number pattern and take it forward. We have a number pattern. 1 into 1, 1. 11 into 11, 1 to 1. Okay. 11 into 11, 1 to 1. How many ones? 1, 2. So we go 1, 2, then decreased sequence. Let us see another example. 1, 1, 1 into 1, 1, 1. Okay. How many ones? 1, 2, 3. Okay. So we will forward counting 1, 2, 3. Then reverse counting 3, 2, 1. So see, in this way we can multiply the numbers which has only 1. So what is the answer here? You can see 1, 2, 3, 4. Then decreased 4, 3, 2, 1 means 4 times 1. 1, 1, 1, 1 into 1, 1, 1, 1. So we can find any answer like this. For example, 1, 1, 1, 1, 1 into 1, 1, 1, 1, 1. What will be the answer? You simply count the 1, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 means both has 5 ones. So we will have forward counting to 5, 1, 2, 3, 4, 5. Then reverse counting 4, 3, 2, 1. So in this way we can find the multiplication by simple pattern. Okay. So this is all for this video. I hope you like this video. If you like this video, please subscribe the channel if you have not done till now. Thank you.